गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन। टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन जो है उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसमें कहा गया है कि जो डिजर्टिफिकेशन है अलार्मिंग स्केल पर फैल रहा है और लैंड डिग्रेडेशन जो है ग्लोबली उसके फिनोमिना हमें देखने को मिल रहा है। तो उसी के लिए उन्होंने कहा है कि ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस करने पड़ेंगे लैंड मैनेजमेंट में। तो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है ये समझते हैं पहले। तो लॉस ऑफ बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी जब इकोसिस्टम्स की हो जाती है, चाहे वो क्रॉप लैंड्स हों, फॉरेस्ट हों, पैस्चर्स हों, उसको हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। तो यूएनसीसीडी के मुताबिक ये जो है अनसस्टेनेबल लैंड यूज़ और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की वजह से होता है। ठीक है। कुछ ह्यूमन जो है कुछ और भी इम्पैक्ट इसके देखने को मिलते हैं, जैसे कि फूड की क्वालिटी ख़राब होती है, क्वांटिटी ख़राब होने लग जाती है, आपकी वाटर बॉर्न डिसीज़ आने लगती हैं, रेस्पिरेटरी डिसीज़ आ जाती हैं ह्यूमंस के ऊपर। फिर हार्मफुल जो रन ऑफ होता है इरोडेड सॉइल्स का, उससे फ्रेश वाटर और मरीन सिस्टम्स पे भी इम्पैक्ट आता है। जो डिग्रेडेड लैंड है वो स्टोर्ड कार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड को भी रिलीज़ करता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो इकोसिस्टम जो है वो उसकी कार्बन अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो लगभग 20% जो है वो कम हो चुकी है पिछले 10 सालों में। ठीक है। तो इसके कॉजेज़ क्या हैं? ओवर यूज़ किया जा रहा है केमिकल इनपुट्स का, पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का, जिससे कि सॉइल हेल्थ ख़राब हो रही है। हीट स्ट्रेस बढ़ रहा है, एरेटिक प्रेसिपिटेशन हो रही है, जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन और ख़राब होता है। अर्बन एरियाज़ जो है उनकी एक्सपेंशन की वजह से भी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है, पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब कौन से रीजन सबसे ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन से जो है वो प्रभावित है? तो साउथ एशिया, नदर्न चाइना, हाई प्लेन्स और कैलिफोर्निया, मेडिटेरेनियन रीजन सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। ये सॉइल इरोजन को फेस कर रहे हैं, रिड्यूस्ड वेजिटेशन फेस कर रहे हैं, वाटर स्कार्सिटी फेस कर रहे हैं। ट्रॉपिकल जो एरिड रीजन्स हैं खासकर अफ्रीका के, वो सबसे ज़्यादा डिग्रेडेशन का जो है ब्रंट फेस कर रहे हैं। 1/3 ऑफ ह्यूमैनिटी जो है, लगभग 3/4 ऑफ अफ्रीका की पॉपुलेशन जो है ड्राई लैंड में ही रहती है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? डिग्रेडेशन की वजह से जो है 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड जो है वो क्राइसिस पे आ चुका है। और हमें क्या स्टेप्स लेने होंगे? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपनानी पड़ेंगी। डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करना पड़ेगा, कार्बन सिंक्स की तरह बनाओ उन्हें। ठीक है। अर्बन एक्सपेंशन को एड्रेस करना ज़रूरी है ताकि नेचुरल हैबिटेट्स पर इम्पैक्ट कम आए। तो इंडिया ने भी क्या किया है, डेजर्टिफिकेशन और पॉवर्टी को लिंक्ड मानकर सोशो इकोनॉमिक इशू की तरह डील करना शुरू किया है। ठीक है। इंडिया जो है उन्होंने एक बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है सॉइल हेल्थ कार्ड्स, ताकि फार्मर्स जो है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ 2024। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर 3 दिसंबर को जो है वर्ल्ड ऑब्जर्व करता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। एक तरह से हम ट्रिब्यूट देते हैं उनकी एबिलिटीज़, अचीवमेंट्स और राइट्स को इंश्योर करके, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के। तो इसको हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है उनकी रेजिलियंस, कंट्रीब्यूशन और लीडरशिप जो है उसको रिकग्नाइज़ करते हुए। 1992 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन ने जो है इस डे को रिकग्नाइज़ किया था, ताकि वेल बीइंग और राइट्स जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के उनको प्रमोट किया जा सके। तो 2006 में कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को भी अडॉप्ट किया गया 2006 में। ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं दिव्यांगजन के इंक्लूजन और राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ बनाना हो, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन हो, दीनदयाल दिव्यांगजन रिहेबिलिटेशन स्कीम हो, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर स्कीम हो, और भी बहुत सी स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट ने बनाई हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्रॉनिक पल्मोनरी एस्परजिलोसिस। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉनिक पल्मोनरी एस्परजिलोसिस जो है उससे लगभग 3,40,000 लाइव्स एनुअली जो है वो चली जाती हैं। ये एक रीसेंट स्टडी में बताया गया है। तो ये क्रॉनिक पल्मोनरी एस्परजिलोसिस होता क्या? सीपीए एक फंगल इन्फेक्शन होती है लंग्स की, जो एस्परजिलस नाम की जो है वो फंगस से होती है। और हाउस होल्ड में कॉमन है ये फंगस, वर्क प्लेसेस में भी, इस पब्लिक प्लेसेस में भी। तो जिनको कुछ कॉमन या क्रॉनिक लंग कंडीशंस होती हैं, जैसे एफसेमा, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, वो सबसे ज़्यादा रिस्क पर रहते हैं डेवलप करने को सीपीए। ठीक है। सीपीए कंटेजियस तो नहीं होता। ठीक है। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है वो सिम्टम्स आएंगे ही, कई लोगों को कोई सिम्टम नहीं आते। ठीक है। मोस्ट कॉमन जो सिम्टम आते भी हैं तो वो कफिंग होता है, कफिंग में मतलब ब्लड निकलता है, अनइंटेंशनल वेट लॉस होना, फैटीग रहना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फेस करना, वीजिंग होना, ये सब जो है सिम्टम्स रहते हैं।
बहुत से लोगों को सीपीए जो है वो एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन की तरह चलता है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एंटी फंगल मेडिकेशन सबसे कॉमन ट्रीटमेंट होता है सीपीए का। सर्जरी भी एक ऑप्शन होता है जिसमें कि सब फंगल मास को बाद में निकाल दिया जाता है लंग्स में से, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रगति प्लेटफॉर्म। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट का जो प्रगति प्लेटफॉर्म है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म, वो कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म कर चुका है, ऐसा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट कह रही है और गेट्स फाउंडेशन की एक रिपोर्ट कह रही है। तो प्रगति प्लेटफॉर्म एक मल्टीपर्पज़ मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसमें कि इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो 3 टियर प्रोग्राम के थ्रू रिव्यू करते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इवन अगर कोई प्रोजेक्ट में दिक्कत आ रही होती है तो स्टेट गवर्नमेंट्स को फ्लैग कर देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेके यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज हों चाहे चीफ सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट्स हों, वो हर महीने में एक बार जो है वो प्रगति प्लेटफॉर्म पर इंटरेक्ट करते हैं, और जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको फ्लैग किया जाता है, और उसके ऊपर जो है काम करने के लिए एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो अगली मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर को देनी होती है, ठीक है। तो इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रगति प्लेटफॉर्म में, चाहे वो डिजिटल डेटा मैनेजमेंट हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी हो, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एवीएम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस जो है उन्होंने अपने क्रेडिटर्स को बताया है कि उनके ऊपर एक ऑनगोइंग ऑडिट चल रहा है नेशनल हाउसिंग बैंक का, क्योंकि कुछ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस डिस्कवर की हैं, ठीक है। तो ये नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है, एक एपेक्स एजेंसी है जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को प्रमोट करती है इंडिया में। तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये एक, और जिसको होली ओन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखो कि रेगुलेशन जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ की वो तो आरबीआई के पास है, लेकिन सुपरविजन जो है वो एनएचबी के पास होती है। आरबीआई जो है वो इंटायर पेड अप कैपिटल जो है वो एनएचबी की कंट्रीब्यूट करता है, जो कि 1988 में सेटअप किया गया था, ओके। तो कंट्री का पहला ऑफिशियल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स भी जो है वो एनएचबी ने ही बनाया है, जिसको हम एनएचबी रेजिडेक्स कहते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज फोर्थ हरिमऊ शक्ति। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो फोर्थ एडिशन है एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति का, वो मलेशिया में जो है वो शुरू हो चुका है। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मलेशिया के बीच में। एनुअल ट्रेनिंग होती है ये, और लास्ट एडिशन इसका 2023 में हुआ था, और इसको जो है जॉइंट मिलिट्री कैपेबिलिटी एनहेंस करने के लिए इंडिया और मलेशिया में अल्टरनेटिवली कंडक्ट किया जाता है। बोथ साइड जो है अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एशिया ओशियानिया मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर्स कॉन्फ्रेंस। टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 14th एशिया ओशियानिया मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो न्यू दिल्ली में होस्ट की जा रही है। सबसे पहली जो है ये बीजिंग में हुई थी चाइना में 2010 में, और उसके बाद हर साल ये अलग अलग लोकेशंस में एशिया और ओशियानिया क्या है आपका वो कॉन्टिनेंट जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला पार्ट आता है, ठीक है। तो ये एक प्रीमियर इवेंट होती है मीटरोलॉजिस्ट्स के लिए, अर्थ साइंटिस्ट के लिए, सैटेलाइट्स ऑपरेटर्स, स्टूडेंट्स के लिए। तो इस बार जो है इसको होस्ट कौन कर रहा है, आईएमडी, ओके। तो इसमें हाई क्वालिटी ओरल एंड पोस्टर प्रेजेंटेशंस, पैनल डिस्कशंस, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स जो है ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। इस कॉन्फ्रेंस में इंपॉर्टेंस ऑफ सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस किया जा रहा है। एडवांस सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग साइंस को जो है वो प्रमोट करना इसका इस बार मोटिव है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हाई रिस्क फूड। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है डिसाइड किया है कि पैकेज ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर सेगमेंट को भी हाई रिस्क फूड कैटेगरी जो है में डाला जाएगा। तो हाई रिस्क फूड क्या होते हैं, जिसमें कि मैंडेटरी साइट बेस्ड या रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। एफएसएसएआई जो है वो अमेंडमेंट्स करता है रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन पॉलिसी में, जिसमें कि अब पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर कैटेगरी को भी डाल दिया गया है। और जितने भी सेंट्रली लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं हाई रिस्क फूड कैटेगरी के, उनको बिजनेस ऑडिट करवाना पड़ता है अपना एनुअली, ओके, ताकि ऑफ कोर्स सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा सके। तो एफएसएसएआई क्या है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर, जिसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंदर बनाया गया 2006 में, ताकि प्रोटेक्ट और प्रमोट की जा सके पब्लिक हेल्थ। ले डाउन करता है ये स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को, डायरेक्टली मॉनिटर करता है कंप्लायंस ऑफ फूड रेगुलेशंस। ये रिस्पॉन्सिबल है एक्रेडिटेशन के लिए भी फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ की थ्रू आउट इंडिया, और रिस्पॉन्सिबल है फूड सर्टिफिकेशन इन इंडिया के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर्स। ये टॉपिक आपके
इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक प्रपोजल रखा है कि 9 वन स्टॉप सेंटर्स जो है वो बनाए जाएंगे एम्पावर्ड कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अप्रूवल के बाद। तो ये सेंटर्स क्या है? ये बेसिकली जो वल्नरेबल सिचुएशन में विमेन अगर फॉरेन में फंस जाती हैं तो उनको, इंडियन विमेन को सपोर्ट करने के लिए सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। तो इनको बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, यूएई, सऊदी अरेबिया और 2 सेंटर्स जो है वो कनाडा और सिंगापुर में भी बनाए जाएंगे। लेकिन वहाँ पर शेल्टर होम की फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, ठीक है। इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करेगा इन जो है वो इस जो ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर्स को बनाने के लिए। और जो इमरजेंसी असिस्टेंस जो है इसमें फ़ंड के थ्रू जो है वो दी जाएगी विमेन को। और जो विमेन को लीगल असिस्टेंस या काउंसलिंग की ज़रूरत है, जिनको अबेंडन कर दिया गया है उनके इंडियन या फिर फॉरेन स्पाउसेस ने, उनको भी इसके थ्रू ही हेल्प किया जाएगा। ओके, सो नाउ let us see all these topics in English. So the first topic is land degradation. This topic is important for your social issues. I'm sorry, environment issues. So United Nations Convention to Combat Desertification has recently released a comprehensive report which has highlighted the alarming scale and consequences of land degradation globally, and it has urged transformative changes in land management therefore. Okay, so what is land degradation? First of all, we need to understand that. So land degradation is basically the loss of biological and economic productivity of ecosystems like croplands, forests and pastures. According to UNCCD, it results from unsustainable land use and management practices amplified by natural and human induced pressures. So, what are the key impacts on it? So, it reduces food quality and quantity, which raises malnutrition risks. It also promotes water and foodborne diseases. It also causes respiratory diseases due to soil erosion. So, harmful runoff from eroded soils impact freshwater and marine systems. Okay, so degraded land also releases stored carbon and nitrous oxide, and ecosystem carbon absorption capacity has also dropped by 20% in the past decade. So what are the causes of this land degradation? Overuse of chemical inputs, pesticides and fertilizers, which disrupt the soil health. Then we are also witnessing increased heat stress and erratic precipitation, which is worsening land degradation. Then we also are witnessing rapid urbanization, which is causing habitat destruction and pollution. Okay, so what are the regions which are most affected by land degradation? South Asia, northern China, high plains and California, Mediterranean. These are the most vulnerable areas. So, so these areas face soil erosion, and they also face reduced vegetation and water scarcity as well. Tropical areas and arid regions, especially in Africa, bear the brunt of degradation due to limited resources and resilience. So, one third of humanity, including three quarters of Africa's population, lives in dry lands, making them especially vulnerable. Okay, so what are the consequences of this land degradation? So, degradation of 15 million square kilometers of land, equivalent to the size of Antarctica, signals a planetary crisis. And immediate steps which are needed to reverse this trend include sustainable agricultural and water management practices, restoring degraded ecosystems to rebuild carbon sinks, addressing urban expansion impacts on natural habitats. Okay, so what are the steps which should be taken by India? So as desertification and poverty are linked, the Indian government is considering land degradation as not just environmental but also socio-economic issue. And India has also initiated several programs to enhance resilience and recovery against land degradation, including issuance of soil health cards, okay, so as to help farmers to engage in sustainable agricultural practices. So the next topic is International Day of Persons with Disabilities. This topic is important for your social issues. So every 3rd December, the world comes together to celebrate the International Day of Persons with Disabilities, which is a day dedicated to recognizing the abilities, achievements, and rights of persons with disabilities. So IPDP is observed annually on 3rd of December, which celebrates the resilience, contributions, and leadership of persons with disabilities worldwide. So this IPDP was proclaimed in 1992 by the United Nations General Assembly Resolution 47.3, and the aim is to promote the rights and well-being of people with disabilities. Okay, so building on many decades of UN work in the field of disability, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities was also adopted in 2006. Several of the initiatives which have been taken by Indian government with respect to PWDs are the
promotion of rights and inclusion of Divyangjan, because we have replaced the word people with dis or persons with disability as Divyangjan. Okay, so some of the initiatives include Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Accessible India Campaign, Deen Dayal Divyangjan Rehabilitation Scheme, District Disability Rehabilitation Scheme, etc. Okay, so the next topic is chronic pulmonary aspergillosis. This topic is important for your social issues. So, chronic pulmonary aspergillosis has generally claims over 340,000 lives annually, with a recent study revealing its severe impact on individuals with pre-existing lung diseases. So, this is a fungal infection of the lungs caused by the aspergillus, which is a common type of mold, and it is commonly found in households, workplaces, and public places, as well as in the outdoor areas. People who have chronic lung infections or conditions like the emphysema, bronchitis, or tuberculosis, they are at the most risk of developing CPA. CPA is not contagious, it cannot be passed from person to person. CPA doesn't always cause symptoms in the early stages. The most common symptom of CPA is coughing up blood. Okay, so other symptoms can include unintentional weight loss, fatigue, shortness of breath, wheezing. For most people, CPA is a lifelong condition, and long term management is needed for that. Antifungal medications are also the most common treatment for CPA, and surgery is also an option for some people to remove the fungal mass from the lungs. Okay. So the next topic is Pragati platform. This topic is important for your governance section. So government's proactive governance and timely implementation platform has transformed the delivery of country's infrastructure projects, which has been confirmed by Oxford University's Side Business School and Gates Foundation recently. So Pragati platform is a multi-purpose and multi-model platform which is aimed to address common man's grievances and also monitor and review the important programs and projects of the government of India, as well as the projects flagged by some state governments. So it is basically a three-tier structure in which the Prime Minister heads the PMO, and he interacts with the union government secretaries and the chief secretaries of the states, and he holds such a meeting monthly and interacts with these secretaries through video conferencing, and it is enabled by data and geoinformatics visuals. So, any of the bottlenecks that are hampering the progress of the country, especially in terms of infrastructure projects, are handled through this Pragati platform with respect to the states also. Okay, so Pragati platform is a unique bundle of latest technologies like digital data management, video conferencing, geospatial technology. Okay, so the next topic is National Housing Bank. This topic is important for your economy section. So Aviom India Housing Finance has informed its creditors about the ongoing audit by the National Housing Bank following the discovery of fraudulent transactions during a recent on-site supervisory inspection. So National Housing Bank is an apex agency which was established to promote housing finance companies in India, and it's an all India financial institution which is wholly owned by the government of India. It supervises the housing finance companies. Remember that regulation is with RBI, but supervision is with NHB. So NHB was set up in 1988, and RBI contributed the entire paid up capital for the same. So NHB broadly functions as part of building a strong, healthy, cost-effective, and viable housing finance system. Okay, through supervision and grievance redressal, financing, promotion, and development. NHB Residex is the country's first official housing price index, which captures movements in the prices of residential real estate prices. Okay. So the next topic is exercise 4th Harimo Shakti. This topic is important for your security section. So 4th edition of exercise Harimo Shakti was commenced at Bantong Camp, Pahang district of Malaysia, and it's a joint military exercise conducted between India and Malaysia. It's an annual training event conducted alternatively in India and Malaysia. The aim of the exercise is to enhance joint military capability of both sides to undertake counterinsurgency operations in jungle terrain under the Chapter 8 of United Nations mandate. So 2024 exercise will be conducted in two phases, and it will enable both sides to share best practices in tactics, techniques, and procedures of conducting joint operations. So the next topic is Asia Oceania Meteorological Satellite Users Conference. This topic is important for your environment and your international relations. So 14th Asia Oceania Meteorological Satellite Users Conference is being held uh, in India. Okay, so this was first held in
2010, and it has been hosted annually in various locations across Asia and Oceania. Oceania is the part which includes Australia, New Zealand like countries. Okay, so it's a continent now. So it is a premier event for meteorologists, earth scientists, satellite operators, students from across the region and the globe. So this year's conference is hosted by the Indian Meteorological Department, and it will feature high quality oral and poster presentations, panel discussions, and training workshop, which will focus on applying current satellite data for meteorological and climatological applications. So it will promote importance of satellite observations, and this conference will also advance satellite remote sensing science. Okay. So the next topic is high risk food. This topic is important for your social issues and governance section. So recently, Food Safety and Standards and Authority of India has decided to treat the packaged drinking and mineral water segment as the high risk food category. So food products which come under the high risk category are subjected to mandatory risk based inspections. So in its the order, FSSAI has made amendments to the risk based inspection policy to include the packaged drinking water and mineral water categories. So this would mean that products now will be subject to mandatory inspections and third-party audits. So all centrally licensed manufacturers under high-risk food categories shall get their businesses audited annually. Okay, the aim is to promote or improve the safety and quality standards of these products for consumers. Okay, what is FSSAI? It's an autonomous body under the Ministry of Health and Family Welfare. It was established in 2006 under the Food Safety and Standards Act. The aim is to this body is responsible for protecting and promoting public health, laying down the standards and guidelines in relation to articles of food. It also directly monitors compliance of food regulations. It is responsible for accreditation of food testing laboratories throughout India, and it is also responsible for the food certification in India. Okay. So the next topic is global one-stop centers. This topic is important for your governance and your social issues. So Ministry of External Affairs proposal to establish 9 one-stop centers has received approval from Empowered Committee of the Ministry of Women and Child Development. So these centers will provide comprehensive assistance to women in vulnerable situations. Out of the 9 proposed centers, 7 will include shelter homes, and they will be set up in Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, UAE, and Saudi Arabia. The remaining 2 centers, which will be located in Canada and Singapore, basically Toronto and Singapore, they will operate without shelter home facilities. So Indian Community Welfare Fund will play a vital role in extending welfare measures to distressed Indian nationals, particularly women. So this fund will now cover emergency assistance also, like boarding and lodging, air travel for these stranded, legal aid, legal aid, medical care, and repatriation of mortal remains also. So ICWF guidelines also include specific provisions for legal assistance and counseling for those women who have been abandoned by their overseas Indian or foreign spouses. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.